Today we have another RR310. I think RR310 सिर्फ वाइट में ही बिक रही है. हमारे पास जितने भी RR310s आए सब वाइट में ही आए. This bike is coming for a bike PPF coating, which we're going to be doing on this bike. So we're going to be adding a paint protection film on this, ताकि stone chip से बचा रहे. It protects your paint, so anything that hits the paint, अगर गाड़ी हल्की से घिस भी गई तो PPF उसका impact झेल लेगा. Whereas the ceramic coating is a little lighter protection, but PPF is the hardest protection जो आप लगा सकते हो अपनी बाइक के लिए. तो अगर हल्की सी गाड़ी घिस गई या पत्थर भी लग गया गाड़ी को, पेंट को डैमेज नहीं होगा. सो इफ यू लुकिंग एट द बेस्ट बाइक PPF कोटिंग पुणे, दैट्स व्हाट वी डू हियर. आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले व्हाट वी गोइंग टू बी डूइंग विद दिस बाइक. वी गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद अ डीकंटामिनेशन वॉश, ताकि पूरी बाइक एक बार प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए. आफ्टर दैट वी मूव इन टू द पेंट करेक्शन स्टेज, जिसमें जो लाइट स्क्रैचेस है या इसको और वाइट बनाने के लिए वी डू पेंट करेक्शन, ताकि जो हल्का फुल्का कंटेमिनेशन होता है पेंट पे वो निकल जाए एंड बाइक हैज़ एन अमेजिंग ग्लॉस ऑन इट. बिकॉज एक बार PPF इंस्टॉल हो गया तो फिर आप पेंट तक नहीं पहुंच पाते हो. तो ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज इफ यू पुटिंग अ 5-year PPF अपनी गाड़ी पे, पेंट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज विल हैव टू रिमूव द PPF, वर्क ऑन द पेंट एंड रीअप्लाई इट, तो आपका डबल खर्चा होगा. सो एनीवेज जुड़ रही है हमारे साथ. स्टेप बाय स्टेप जो भी इस बाइक पे कर रहे हैं आपको दिखाएंगे, ताकि आपको मालूम हुआ अगर आप PPF करा रहे हैं कहीं पे, यानी अगर आप अच्छा PPF करा रहे हैं कहीं पे, क्या स्टेप्स होते हैं. एंड ऑब्वियसली मार्केट में PPF स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 2000 टू अबाउट 15, 18, इवन 25,000. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द शीट दैट आप डाल रहे हो. आप सस्ता वाला भी लगा सकते हो, बट फिर आप जब निकालोगे तो पेंट साथ में निकल सकता है PPF के. सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा PPF लगा रहे हो गाड़ी पे. सस्ते वाले भी हैं बट उसके साथ पेंट निकलेगा. सो मेक श्योर अगर आप लगा रहे हो एक ही बार लगाओ एंड गेट अ गुड PPF ऑन द बाइक. So anyways, let's move into the first stage, which is a decontamination wash. So guys, the next process जो हम करने वाले हैं is called the paint correction. So basically what we are doing is to remove all the finer scratches from the paint. Even जब गाड़ी शोरूम से आती है उस पर हल्के फुल्के scratches होते हैं. The paint is not even, so we're pretty much going to even out the paint with this machine that we're going to be using. We'll do a good paint correction and get more gloss out of the paint, because एक बार ये PPF इंस्टॉल हो गया आप really पेंट तक पहुँच नहीं पाओगे, because PPF शीट होगी बीच में. तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है to get the shine, the gloss and the scratches out of the paint. Because अगर ये स्टेज ठीक से नहीं किया, सो यू नेवर रियली गोइंग टू गेट द फिनिश ऑफ द PPF ऑन द बाइक. वो फिनिशिंग कभी नहीं आ सकती. तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको बहुत एम्फेसिस देना पड़ता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये वाले स्टेप को. दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द PPF एप्लीकेशन प्रोसेस. तो ये वाले स्टेज को जब भी आप काम करा रहे हो, मेक श्योर दिस स्टेज इज़ डन प्रॉपर्ली. ठीक है, थोड़ा मार. तो अभी स्टार्ट करते हैं पेंट करेक्शन वाला स्टेप. So guys, we have Omkar who's come to pick up his RR310, and
Omkar's got this bike and he's going to be starting his motor vlogging channel as well. Link to which we leave in our description so you can follow him. He's just starting out, so give him some room in terms of videos. Probably won't be coming that often, or how are you going to go about it? Why don't you tell them? Well, I'll only try to film like my trips, which are like pretty more than like 200 kilometers or something. So most probably you should expect a video, one video per month or something, because I do have a job. So yeah, I'll try to see like. काफी memes भी डालना उसमें, make it fun. Yeah, obviously. How do you like the entire PPF and how do you come to know about it looks amazing. Is the white looking a lot brighter than it was before? Definitely, it's looking brighter. As far as I can see it, I don't see any bubbles. Yeah. So that's a plus. So you can't really make out as such that there is it doesn't look like it. The PPF is done on it. It looks brand new, to be honest. And scratch proof now. So you can pretty much do anything. It's scratch proof. It won't really go through the paint. Yep. So why did you choose PPF? Well, the thing is, I work in the edtech industry. So there is an institute above me. So there are like a lot of small kids around. So they like to come and sit on the bike. So because of that, if it would easily get scratched. I thought so. So I felt like ceramic coating won't cover it. So I went out for PPF. Yeah, that is the best paint protection. If you're looking at that, the bike PPF is one of the best paint protection that you could possibly get in order to protect the bike. So his bike is protected now. But enough of work talk. We wanted to make this a little more about bikes. Okay. So a lot of people have a question. TVS makes this bike. It's literally the same bike, which is rebranded in BMW. Why do they charge so much? Yeah. Why do they charge so much when the features are actually less? TVS, logo. Exactly. The logos on both the side. Actually, TVS provides you with better tires. You get Bluetooth connectivity. But yeah, eventually it's a BMW, so they do charge for the logo. 3 लोगों के 15,000, 1, 2, 3, 30,000 उसके लिए. Yeah. So 10,000 per logo. Just about the logo. That's all. But yeah, we'd be looking forward to seeing a lot of your motor vlogs coming soon. Please be consistent so we can also enjoy your content. So guys, don't forget to subscribe to his channel. He had a gaming channel earlier. Yeah, it was a gaming channel. I used to play CS, Dota, like all mainstream PC games. Then like job came in and then I completely turned off live streaming. So yeah, I'll start again, definitely. Great. So yeah, we'll be seeing your bike more often and in your motor vlogs as well. Yeah, definitely. Thank you so much, Omkar. Yes, thank you. Lovely. Thank you.